Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Yesterday we have studied the responsible factors or action of physical weathering. Today we will study the second process of weathering, which is chemical weathering. But before studying chemical weathering, let us assume our previous knowledge in which we study the physical weathering. So let us remind me once again that physical weathering is actually the physical disintegration of rock material into smaller pieces. यानी कल हमने अपने लेक्चर में फिज़िकल वेदरिंग के बारे में पढ़ा था और उसके फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था कि जो उसके फैक्टर्स के जो चीज़ें उसमें शामिल हैं. तो असल में फ़िज़िकल वेदरिंग पत्थरों का छोटे छोटे हिस्सों में मौसमी असरात की वजह से तब्दीली को कहते हैं. Today we will discuss chemical weathering, which is another factor of weathering. So let us discuss. Chemical weathering breaks down rocks by changing the minerals inside of it. यानी जो केमिकल वेदरिंग है इसको आसानी से ऐसे समझा जाता है कि जैसे पत्थरों पे तेज़ाब डाल दिया जाए, इसमें कीमियाई या नामियाती यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी जो सलूशन है वो चट्टानों पर अमल करते हैं और उनमें मौजूद जो हलपजीर मिनरल्स हों उसको ख़त्म करके उसको इतना खोखला कर देते हैं कि वो आसानी से टूट फूट कर बिखर जाती है. और इस अमल में बारिशों, दरियाओं और समंदरों का पानी सलूशन के तौर पर इस्तेमाल होता है, इसके ऊपर काम करता है. यानी फ़िज़िकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग में फ़र्क इतना है कि फ़िज़िकल वेदरिंग में एक चट्टान की फ़िज़िकल शेप जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन उसकी केमिकल कम्बिनेशन है उसमें कोई अंदाज़ा हमें नहीं होता. लेकिन केमिकल में हम देखते हैं तो इसमें केमिकल चेंजेस होते हैं, क्योंकि जो पत्थरों पर मौजूद नमकियात होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, तो वो पानी के साथ महलूल की शक्ल बना के और पत्थरों के तराड़ों में नीचे जाके उस पर अपना अमल शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वो टूट फूट का शिकार हो जाती है. टाइप्स ऑफ केमिकल वेदरिंग में आप यहाँ पे पिक्चर में देखते हैं कि जिस तरीके से यानी मतलब ये चट्टानों पर पानी बहुत ज़्यादा यानी मतलब लंबे अरसे से पड़ते हों तो वो इस किस्म की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेते हैं, यानी मतलब इसमें दरारें बहुत गहरी पड़ जाती हैं, जिस तरह आप तस्वीर में मुलाहिजा करते हैं. दूसरे में रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यानी मतलब जब हवाएं चलती हैं तो पत्थरों के ऊपर से मौजूद गंदी तहों को हटा के उसको साफ बनाती है. और तीसरा जब रिएक्शन विद एसिड, यानी जब अब बारिश का पानी यानी मतलब उसमें हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और वो चीज़ें उसके साथ मिल जाती हैं तो उससे एसिड रेन बन जाता है. जब ये एसिड रेन पत्थरों पे पड़ जाते हैं तो उसको इतना ख़त्म कर लेती है और इसमें सिंक होल्स जो है वो पैदा करते हैं, जो कि ज़मीन के सतह पे आपको एक होल दिखाई देता है. इस किस्म के तामुलात से जो है वो वजूद में आते हैं. और लास्ट में आप रिएक्शन विद ऑर्गेनिज़म, यानी मतलब आप देखते हैं कि इन पत्थरों पे जो है वो फफूंदी लगी हुई है, तो इसके तामुलात से ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गल सड़ जाते हैं और पत्थर जो है वो गल जाते हैं और टूट कर बिखर जाते हैं. Oxidation is another reaction of chemical weathering. So let us discuss that what is oxidation. Oxidation, the reaction of certain metals with oxygen in the air to form compounds called oxides. यानी ऑक्साइड क्या है? ये कई तत्वों का हवा में ऑक्सीजन के साथ मिलाप है जिससे मुरक्कबात बनते हैं, जिसको ऑक्साइड्स कहते हैं. और इसकी वजह से भी यानी मतलब ये रस्ट को कास्ट कर लेते हैं. इसमें बहुत से मेटल्स और भी शामिल है जो हवा में यानी मतलब हवा के साथ मिलके और ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से गुजरते हैं, जिसमें है मेटल्स दैट आर अफेक्टेड इंक्लूड आयरन, कॉपर एंड सिल्वर. यानी लोहा, तांबा और सिल्वर ऐसी धातें हैं जो भी ऑक्सीडाइज होके रस्ट का शिकार होती है. बहुत से ऐसे पत्थर भी हैं जो कि हैं रॉक्स कंटेनिंग हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट कैन बी वेदर्ड. यानी वो पत्थर जिसमें मकनातीसी मादन, जिसमें लोहे और ऑक्साइड का मिलाप पाया जाता है, वो भी अगर इसमें हो, या
پر آکسائڈ آف آئرن یعنی لوہے کی کچ دھات اگر اس میں شامل ہو تو یہ بھی آکسیڈائز ہو کے یعنی مطلب آکسیجن کے ساتھ مل کے رسٹنگ کا شکار ہوتی ہے اور پتھروں کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار بناتی ہے۔ اس کے بعد کاربونیشن پڑھیں گے۔ Another factor carbonation, the reaction between calcite and weak acids in rain water and acids in ground water۔ کہتے ہیں کہ جب بارش ہوتا ہے تو اس میں یعنی مطلب یہ جو کیلسائٹ ہے یہ اصل میں سفید یا بے رنگ معدن ہے جس میں کیلشیم کاربونیٹ بھی موجود ہوتا ہے، اس میں سوڈیم پوٹاشیم یہ بہت سے یعنی مطلب اس میں منرلز شامل ہوتے ہیں، تو وہ پانی کے ساتھ عمل کر کے کمزور تیزاب بناتے ہیں جو پتھروں پہ پڑ کے اس کو مختلف قسم کے یعنی تباہلی کا شکار کرتے ہیں۔ راکس دیٹ آر ویدرڈ مینلی بائی کاربونیشن آر ماربل اینڈ لائم سٹون، یعنی جو چونے کے پتھر ہے اور ماربل ہے یہ اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، کاربونیشن سے یہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں، یعنی اس میں بارش کے پانی کے ساتھ کچھ منرلز مل کے جو ہے وہ پتھروں کے سطحوں کو یعنی مطلب شکست و ریت سے دوچار کر لیتی ہے۔ اس کے بعد ہائیڈرالیسس یا ہائیڈریشن پڑھیں گے تو کہتے ہیں کہ دی کیمیکل ریئیکشن آف منرل ود واٹر، یعنی ایک کیمیائی تعاملات ہوتی رہتی ہیں کیمیکلز کا، یعنی یہ اگر پانی کے ساتھ ہو جائے تو اس میں بھی پتھروں پہ بہت برا اثر پڑتا ہے، جس طرح آپ تصویر میں بھی دیکھتے ہیں کہ اس پتھروں کو یعنی مطلب یہ مختلف قسم کے ویدرنگ کا یہ شکار ہو چکے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہائیڈرالیسس کاز مور کیمیکل ویدرنگ دین اینی ادر ٹائپ پیلٹس پر ریئیکٹ ود واٹر، یعنی کہتے ہیں کہ ہائیڈرالیسس میں یعنی پانی کے ساتھ ملاپ میں زیادہ تباہی جو ہے وہ آتی ہے، یعنی زیادہ ویدرنگ اس میں ہوتا ہے بنسبت دوسرے ٹائپ کے ویدرنگ میں۔ اصل میں یہ جو پیلٹس پر ہے پتھروں کا وہ گروپ ہے جس نے کرسٹ کا 60% بنایا ہوا ہے، تو اس میں بہت سی چیزیں بھی شامل ہیں، تو کہتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ وہ تعامل کرے تو کرسٹ کو بھی اور اس کے اوپر موجود پتھر کے چٹانوں کو بھی بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان پہنچتا ہے۔ گرینائٹ کین بی ویدرڈ بائی ہائیڈرالیسس، اور گرینائٹ جو ہے میگما یا لاوے کی جو ہے وہ سوکھی ہوئی شکل ہے، تو اس کے ساتھ میں یہ مل کے مختلف قسم کی جو ہے وہ ویدرنگ اس سے ظہور پذیر جو ہے وہ ہوتا ہے۔ آج کے لیے لیکچر میں آپ نے جو کچھ پڑھا اس کو امید ہے آپ نے سیکھا ہوگا، تو آپ کا آج کا جو ہوم ورک ہے وہ بالکل سمپل ہے۔ آپ کا ہوم اسائنمنٹ جو ہے وہ رائٹ اینڈ میمورائز آکسیڈیشن اینڈ ہائیڈریشن، یعنی ایک مرتبہ پھر سن لیجئے کہ آج آپ کا جو ہوم اسائنمنٹ ہے اس میں آپ نے رائٹ کرنا ہے اور میمورائز کرنا ہے آکسیڈیشن اور ہائیڈریشن کے ڈیفینیشنز کو۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، کل نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، والسلام۔